Hello dear students, welcome back to the video lectures of CK Coaching. Today we are discussing the third part, which is the remaining topic of our continuation of the chapter Human Eye and the Colorful World. Last part में हमने देखा था basically the twinkling of stars. So today we'll start with this Human Eye and the Colorful World with the remaining topic जो हमने छोड़ा था, which is twinkling of the star. So basically we should understand one question, that why do star twinkles, or does it really twinkles, or it appears to do so. To understand this, we should keep in mind that stars are basically a point source of a light. So when we say point source, तो हमको ये चीज़ याद रखनी है that a concept of a light year, basically the distance which are traveled by the light in 1 year, roughly 6 trillion miles एक light जो कि star से है वो travel करता है. Now let's just understand that what is the actual and apparent position of the starlight. So we know that as we go above the earth's surface, the density or the surface density, or we can say the optical density to be more precise, decreases. So हमारे पास just above the earth's surface we have a denser medium, and as we go up the optical density decreases and we approach towards the rarer medium. And as we know that light rays while moving from rarer to denser medium वो bend होगा towards the normal. So rarer medium and denser medium बहुत सारे layers हैं. अभी के लिए हम 3-4 layers को assume करके एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एंड लेट्स से कि लाइट्स इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइट. तो इस स्टार से आने वाली लाइट कुछ इस तरीके से बेंड होगी एज इट एंटर्स द अर्थ सरफेस और द अर्थ एटमॉस्फेयर. एंड अगर आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करोगे देन यू विल सी दैट एक्चुअल पोजीशन से हटकर हमें स्टार कुछ यहाँ पे दिखाई देगा, विच इज़ कॉल्ड द एपरेंट पोजीशन. एक्चुअल पोजीशन एंड एपरेंट पोजीशन के बीच में डिफरेंस दिखाई दे रहा है. Now because of this we should also bear in mind कि ये जिस लेयर से आ रही है starlight from this space, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली फ्लक्चुएट हो रहा होता है because of the atmospheric condition. Air is continuously moving in a random motion, so because of which the medium itself is fluctuating. तो हमें कुछ starlight यहाँ पे दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई दे सकता है. Over a period of time ये continuously fluctuate होता देगा. So there are few facts which you should mention in your answer while discussing or writing or elaborating about the twinkling of star. The first thing is that stars are considered to be a self-luminous object. मतलब ऑब्जेक्ट जो कि खुद ब खुद बिना किसी की मदद से लाइट सोर्स की तरह काम करता है और अपना लाइट वो निकालता है, या which has a capacity to emit the light, are self-luminous object and can be seen as a night in the absence of sunlight. So they appear to be the point source because the reason being they are at a very larger distance from us. Roughly मैंने बताया था 6 million or 6 trillion light years ahead. So the apparent position of the star keeps on fluctuating a bit. This is because of the motion of the atmospheric air and changing air density and temperature. We should mention that atmospheric air, changing air density and the temperature. And because of this the refractive index of the air keeps changing continuously, and because of this change the position and the brightness of the star keeps continuously and changing, and the star appears to be twinkle. So does it really twinkles? Answer is no. It appears to twinkle because of these 1, 2, 3 and 4 points which we should clearly mention in our note, as well as we should draw the diagram as per the NCERT which has been mentioned. Now let's just see that why don't the planet twinkles, or why planet do not twinkle. Now to understand this हमको ये याद रखना है that star basically are at a very far off distance, whereas planets although star के comparison में थोड़ा close होते हैं. So the layer which is closest to the earth is denser medium, and the layer which is away from the earth is considered to be the rare medium. Now understand that this is a planet which is near to the earth as compared to the star. So the planet can be considered as a collection of large numbers of point sources. ये बहुत important point है which we should mention, that when we talk about the star then it is considered to be a single point source. जैसे LED बल्ब में एक LED लाइट की तरह एक छोटा सा LED जो पैनल होता है उसमें से एक LED को आप इमेजिन कर लो. वैसे ही बहुत सारे LEDs को मैं एक जगह पे रख दूँ, समथिंग लाइक दिस. ट्रैफिक लाइट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे LEDs को एक पैटर्न में रखा जाता है, एंड ओवर द larger distance it appears to be one source. So exactly same phenomenon is happening over here as per the planet. It is considered as a collection of a large number of point sources, something like this. So planet are much closer to us as compared to the star. I am discussing the reason जो आपको लिखना होगा अपने आंसर शीट में.
Second thing is therefore they do not appear as a point source but as a collection of the point source, and because of changes in atmospheric refractive index, the position as well as brightness of the individual point source changes, but the average position and the average brightness remains unchanged and planets does not appears to twinkle. So point two things which we should clearly mention as per the marking scheme is that number one, they are at much more closer distance than the star, and second thing, not like star but they independently appears to be a collection of the different point sources which ultimately cancel out each other's brightness effect. Now apart from this, there is another atmospheric refraction which is advanced sunrise. Now sun appears to rise 2 minutes earlier. Now to understand the reason here, let's imagine that this is the earth and there are different layers of airs, and imagine yourself to be here. Sorry for this because I could not find any funnier picture for this. Now imagine that this is a horizon, like horizon को हम यहाँ पे as a normal treat करेंगे, a normal line which we have been learning since chapter light. And let's say the sun is rising, it has not risen properly, अब ये horizon को cross नहीं करा है. To see it clearly, the actual position का किसको माना जाता है? Basically the sun की position जब horizon को cross कर लेती है, then it is considered to be the actual position. Like but sun से जो rays आ रहे हैं वो continuously पहुँच रहे होते हैं. In fact, roughly around 2 minutes पहले ही पहुँच जाता है. 2 minutes before it can cross the horizon, we see that sun is rising. Now this is actually happening here. If you can see, continuously bending होने की वजह से towards the normal हमको sun 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है, but actual में कुछ यहाँ पे होगा. So this is the rising sun which is the actual position, but हमें उसके apparent position को 2 मिनट पहले ही पता चल जाता है. Exactly the same thing happens for the delayed sunset. यानी sun already horizon को cross कर चुका होता है, but उसके 2 मिनट बाद तक हमें उसके रेस पहुँच रही होती है. अब हम दूसरे डायरेक्शन में अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, दिस इज द होराइजन, सन इज ऑलरेडी सेटिंग, बट स्टिल यू सी द लाइट रेज कंटिन्यूसली बेंड एंड सन अपीयर्स टू बी एट दिस पोजिशन विच इज कंसिडर्ड एज एन apparent position. Another phenomena which we have to bear in mind, because of which the color of the sky changes, is scattering of light. Now what is this scattering of light? To understand this, we will recall the phenomena which we have learned in class 8, which is regular and irregular reflection. Now let's say there are these parallel beams of light which are coming and they are falling on the smooth surface. I1, I2, I3 basically are the incident angle, and as we know angle I is equals to angle R. तो आप इस तरीके से देखोगे कि parallel beams of light falling on a smooth surface will go back making a parallel rise. So this is considered as a case of a regular reflection. What is this irregular reflection जिसको हम diffuse reflection भी बोलते हैं? लेट्स से कि हमारे पास कुछ एक रफ सरफेस है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस पे कुछ पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट ही फॉल करेंगे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कुछ इस तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर जाएगा. इस केस में एंगल ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, बट द वैल्यूज ऑफ एंगल आई इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ द रफनेस ऑफ द सरफेस. सो दिस इज कॉल्ड द इरेगुलर रिफ्लेक्शन. सो नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि होता क्या है कि when the parallel beams of light are coming into the earth surface, they fall and cross the surface horizon, या फिर हम बोल सकते हैं the layers, then there is an irregular surface. So this is considered as an irregular surface, and because of which there is an irregular reflection which is happening. So what is now scattering? It's a process of absorption and then re-emission of the light energy. Scattering का मतलब absorption and re-emission, and इस केस में irregular reflection हो रहा होता है, and that is the basic cause of the scattering. Now there are certain factors upon which the scattering of light will depend. First one is the wavelength of the light. Like we see that there are waveguide, that it violet, indigo, red, blue, green, yellow. So ये पूरा एक 7 set of colors है. Violet light की wavelength काफ़ी छोटी होती है, and then उसके बाद indigo, then blue, then green, then yellow, orange, red, and then this is the part we have to keep on revising. Understand this. रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, एंड वायलेट, इंडिगो, ब्लू जो नीचे के 3 कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है. कंपैरिजन के लिए हमें याद रखना है दैट वायलेट लाइट इज स्कैटर अबाउट 16 टाइम्स मोर दी
रेड लाइट। इसका मतलब ये है कि लार्जर इज द वेवलेंथ, लेस इज द स्कैटरिंग। आई रिपीट, लार्जर इज द वेवलेंथ, लेस इज द स्कैटरिंग, लेसर इज द वेवलेंथ, मोर विल बी द स्कैटरिंग फेनोमेना। सो द नॉर्मल स्काई का कलर हम लोग ब्लू इसलिए बोलते हैं बिकॉज ब्लू, इंडिगो, वायलेट, नीचे के ये जो 3 कलर आप देख रहे हो उनकी वेवलेंथ काफ़ी छोटी होती है एंड स्कैटरिंग उसकी ज़्यादा होती है। साइज ऑफ अ पार्टिकल इज द सेकेंड फैक्टर अपॉन विच द स्कैटरिंग ऑफ लाइट विल डिपेंड। स्मॉलर इज द पार्टिकल साइज, इट विल रिफ्लेक्ट और स्कैटर मोर द ब्लू लाइट, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। अ बिग पार्टिकल ये रेड लाइट को एंड ऑरेंज लाइट को ज़्यादा स्कैटर करेगा एंड वेरी बिग साइज पार्टिकल ये बेसिकली स्कैटरिंग होने नहीं देगा। सो वाई वी हैव टू कीप इन माइंड कि डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्काई क्यों अपीयर होता है। लेट्स सी कि सन इज ओवर द हेड, सो द रे विल ट्रैवल द लीस्ट डिस्टेंस, सो मिनिमम स्कैटरिंग विल हैपन। इसलिए नून टाइम पे इट अपीयर्स टू बी वाइट कलर्ड स्काई। डिफरेंट कलर्स ऑफ द स्काई में अगर हम देखें, सन अब नून टाइम से इवनिंग टाइम या फिर आफ्टरनून टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, सन रेज विल बी ट्रैवलिंग अ लार्जर डिस्टेंस, मोर स्कैटरिंग विल हैपन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम में, इसलिए हमको ब्लू या इंडिगो कलर का स्काई दिखाई देता है। एंड देन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यहाँ पे हम देखेंगे रे ट्रैवल द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, सो मैक्सिमम स्कैटरिंग किसकी होती है, मैक्सिमम स्कैटरिंग ब्लू एंड देन फर्दर येलो एंड ग्रीन लाइट्स एंड रेड लाइट की लीस्ट स्कैटरिंग होगी हमारे पास। रेड एंड ऑरेंज कलर गेट्स स्कैटर्ड द लीस्ट and that is the one reason because of which the traffic lights or the alert light are red colored, क्योंकि स्कैटर कम होगा, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा। Now why is the color of the space black? First reason, no atmosphere, so no scattering and hence no color. Now understand this, sun is the ultimate source of light or the energy, चाहे वो अर्थ हो या फिर और कोई दूसरा प्लैनेट, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ या इंटेंसिटी या सेम टाइप हम बोल सकते हैं लाइट रेज जाएंगी। जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे देयर विल बी अ स्कैटरिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। जिसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी एंड इट अपीयर्स टू बी ब्लैक एंड दस द स्पेस अपीयर्स ब्लैक। And the last part which is left here is about the Tyndall effect. You have been learning since class 9 that the phenomena of scattering of light by the colloidal particle is called the Tyndall effect. एक छोटा सा experiment है which we will be considering to end up this chapter. Source of a light is considered. ये convex lens है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम colloidal solution को fill करेंगे, एक कार्डबोर्ड जिसके अंदर होल होगा, वापस से एक convex lens लेंगे एंड अगेन एक स्क्रीन को लगाएंगे। लाइट सोर्स में से लाइट आएगा, कुछ लाइट को हम डायरेक्ट करेंगे विद द पिन होल या फिर कार्डबोर्ड एंड हम देखेंगे कि व्हेन द कोलाइडल सॉल्यूशन इज जस्ट विदाउट एनी मिक्सचर तो हमें स्क्रीन में वाइट लाइट दिखाई देगा। लेकिन हम कुछ सब्सटेंसेस को डालेंगे, मैं फिर से दिखा रहा हूँ क्या सब्सटेंसेस हैं, सोडियम टाइसल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, और इनको डालने के बाद जब हमें लाइट रेज को इस तरीके से निकालने की कोशिश करता हूँ तो जो सोल्यूशन है कोलाइडल सोल्यूशन वो ब्लू कलर का हो जाएगा एंड द स्क्रीन पे जो स्पॉट पहुंची है वो रेड कलर का होगा। कंक्लूजन हमें दो बातें याद रखनी है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू गेट स्कैटर द मोस्ट हैंड सोल्यूशन विल टर्न अ ब्लूइश इन कलर, ऑरेंज एंड रेड लाइट विल स्कैटर द लीस्ट डिस्टेंस एंड दे विल स्कैटर द लीस्ट हैंस दे कैन कवर द मैक्सिमम डिस्टेंस एट द एंड ऑफ द स्क्रीन, वो रेड कलर का लाइट वहाँ दिखाई देगा। तो बाकी जो स्मॉलर वेवलेंथ के लाइट है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते, वो पहले ही स्कैटर हो जाते हैं, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन ये बेसिकली अपीयर होता है ब्लू कलर का। दिस इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, न्यूमेरिकल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस एंड इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।